Good morning, students. Today we are going to study chapter 5th, prepositions of class 10th. So first you see the sentences here given in book. My grandfather always went to school with me because the school was attached to the temple. So in these sentences, can you tell me which are the prepositions? Prepositions ko. Which are the prepositions? This the bold word you see, to, these are the prepositions. You already know, I think, in, on, at, before, after, all these are the prepositions. In the previous class we have read it. Getting? So you see, what are the prepositions called? Here the definition is there, you see in book. Prepositions are a small set of English words or expressions that show the relationship between a noun or pronoun and another word in the sentences. Getting? So what does it mean? It is saying that gote preposition gote sub sentence re gote noun सहित अलगा फॉर्म अलगा एक्सप्रेशन को जोड़ी थाए. एठी देखो, here you see school is a noun and went is a verb. Getting? So here verb is there, here noun is there. So in every sentence a noun or pronoun must be there, and with the noun or pronoun another expression will be joined by the prepositions. Getting? So this is called the prepositions. So prepositions work is, preposition ro kamo hala गोटे नाउन किंबा प्रोनाउन को सेंटेंस रो अलगा एक्सप्रेशन सहित से कोन करिवो जोड़िवो, नहले सेंटेंस टा क्लियर मीनिंग देबो नाही. गेटिंग? सो यू सी तार एग्जांपल्स हमें देखिबा. हियर यू सी द बुक इज ऑन द टेबल. इफ आई से द बुक इज द टेबल, is it be a right sentence? The book is the table? No, it doesn't have any meaning. The book is the table means bohita table. This is wrong. Tale bohita table upare achi. This means that the book is on the table. The book is on the table. Here the book on the table is mine. Suppose we say the book, the table is mine. It doesn't have any meaning. Getting? यार किसी मीनिंग आसीबनी. तले the book on the table. Here book is noun, table is also noun. It joins the two nouns. Here is the verb and table is the noun. It joins but relate a verb with a noun. So prepositions work is, it always joins a noun or pronoun with another expression of the sentences. What are the other expressions? We will read below. ओके, तले एठी हमें कोन बुझिले? प्रीपोजिशन होउची गोटे शब्द जे नाउन को किंबा प्रोनाउन को वाक्यर अलगा एक्सप्रेशन सहित जोड़ी गोटे सफलपूर्ण मीनिंग दे थाए, नहेले वाक्यर अर्थ किछि बुझा पड़िबो नाही. गेटिंग? इट इज द प्रीपोजिशंस. I put the book on that table. जदि on टाकु मु उठै देबी, if I remove this on, then what happens? I put the book on that table. Remove कर देले, I put the book that table, does not have any meaning. Getting? So you see in the next expressions. Here you see. तले प्रीपोजिशन टी वाक्यर गोटे नाउन किबा प्रोनाउन सहित अन्य काहा को जोड़ी थाए. देखिबा. This the preposition joins a noun with another noun. Here the preposition at joins an adjective. Here good is adjective, you know, he is good. Here the adjective is there. Adjective with another noun. Mathematics is noun.
Here to is the preposition, it joins. If this is the verb, you see, you must listen. Listen is the verb, and here teacher is the noun. So it joins a verb with another noun. He writes well for his age. Here these the four prepositions. Four prepositions. It joins an adverb with another. Here the noun. His age. His age is a noun. Getting? It joins an adverb with a noun. Here you say, it is surprise. I expressed my surprise. Surprise is the noun. Art is the preposition. This the surprise joins with an WH clause. What clause? Getting? What he said. So these are the function of what it is the prepositions. Means the prepositions ବାକ୍ୟରେ କୋଉଠି କୋଉଠି କେମିତି ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି ଏତିକି ଆମେ ବୁଝିଲେ। ତାହେଲେ ପ୍ରିପୋଜିସନ କ'ଣ କରୁଛି? ଗୋଟେ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ ସହିତ ଯୋଡୁଛି, ଗୋଟେ ନାଉନ୍ କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆଡଜେକ୍ଟିଭ ସହିତ ଯୋଡୁଛି, ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ କୁ ଭର୍ବ ସହିତ ଯୋଡୁଛି, ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ କୁ ଆଡଭର୍ବ ସହିତ ଯୋଡୁଛି, ନାଉନ୍ କିମ୍ବା ପ୍ରୋନାଉନ୍ କୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି? WH କ୍ଲୋଜ ସହିତ ଯୋଡୁଛି। Okay, in this way we are using the prepositions in a sentence. Okay, and those the prepositions in our book, it is given the three types according to their functions. You see, we have three types of prepositions. One is the single word preposition, another one is the multi word preposition, and the third one is participle, ing. Getting? So single word preposition already we have read before many times in class 6, 7, 8, about, among, beside, during, into, on, though, across, at, between, except, like, over, till, after, etc. Getting? So these are the preposition you will learn. Next one is the multi-word preposition, you see, according to, due to, along with, except for, in addition to. These are the multi-word prepositions. Okay? Next one is preposition with ing. Accepting, barring, following, concerning, considering, including. Some examples are given here. This is not given in book. You see, including what a preposition केमिति आमे वाक्य रे ताकू व्यवहार करिबा. Including this year, 6 of the 7 warmest years on record have occurred since 2001. Barring लगे कि केमिति आमे सेंटेंस तैयारी करिबा. Barring accidents, we should arrive on time. Accident को प्रतिहत करी आमे कोन कलु? We should arrive on time. आमे ठीक टाइम रे पहुंचीबा उचित. The sanctions ban the sale of any products excepting medical supplies and food. So these are the preposition of ing, or we are saying it is the participle ing. Participle prepositions. What saying? Participle prepositions. So the most important thing that come in your our exams, those are what? In this the expressions here we read that ये जो prepositions रहिला, prepositions वाक्य रे सबु बेले noun किंबा pronoun पूर्वरु बसे. Prepositions are placed just before the nouns or pronouns, but sometimes they also appear at the end of the sentences. You see, when you find in WH question sentence, what are you looking at? These are the examples. In relative clauses, relative clause, you know, this is the book I have been looking for. This is the book. This is the main clause. I have been looking for. I have been looking for means this is the book which I have been looking for. This one is the relative clause. Okay. So in this the relative clause sentences you see, in the relative clause this is the main clause and this one is the subordinate clause or the relative clause. Relative clause thile sesare preposition basi pari. Passive sentence re mathe basi paribo. You see, I don't speak
until I am spoken to. I am spoken, this is the passive sentence. मते न कुहाला पर्यंत ला मु किछि कहिबी नाही. Infinitive थिले देखो, there was no chair to sit on is the infinitive ला non finite form. Exclamatory sentence रे मध्य देखि परिबा, what a difficult situation he is in. एई भली सेंटेंस रे प्रीपोजिशन वाक्यर शेष रे मध्य बसी पारे, किंतु जनरली आमे कोन जानिचे, जनरली प्रीपोजिशन टा नाउन किंबा प्रोनाउन रो पूर्वरु बसे, आमे जहा पूर्वरु देखि आसे. अंडरस्टूड. नेक्स्ट तले आमे जो प्रीपोजिशन को क्लासिफाई करथिले, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेसेस, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन अदर प्रीपोजिशंस. तले प्रथमे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढिबा हला. प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रे प्रथमे आर्ट पढिबा. कौन पढ़िबा? आर्ट पढ़िबा. ओके. सो व्हाट इज प्रीपोजिशन ऑफ आर्ट? आर्ट इज यूज्ड टू शो द एग्जैक्ट पॉइंट. एग्जैक्ट पॉइंट जगह छोटो जगह आमे कौन बसई थाउ? आर्ट लिखि थाउ. तले एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ हाउस, स्टेशन, विलेज ए गुडा कथिले आमे आर्ट करिबा हला. तले केमिति वाक्यटा लिखा हिची देखो. हियर इन द फर्स्ट एग्जांपल सी इज स्टैंडिंग एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, एट द डोर, एट द बस स्टॉप. तले एट द कॉर्नर को कहले मींस कोन बुझे? स्ट्रीट रे गोटे पर्टिकुलर प्लेस, छोटो जगह, पर्टिकुलर पॉइंट, सेति पे सेठी लिखाला एट द कॉर्नर हला. किंतु खाली स्ट्रीट थिले इन ही था हला. सेही भड़ी at the door, door means door pakare, a particular point is there. Bus stop is not a big or very vast area. Bus stop कहले जोठी बस छिडा हुए, it's a small place. तेनु ता पाखरे हम at the bus stop लिखुछ. He lives at 95 बापूजी नगर. बापूजी नगर is a big area. खाली बापूजी नगर के थिले आमे इन बसई थांते, किंतु 95 लिखाइछ means बापूजी नगर 95 लेन, 95 गड़ी रे. तेणु 95 lane is a small place. So there we use at a particular point को आमे एठी बुझिले. He works at the public library, at the city general hospital. एगुडा को मध्य हमर कोन हला पर्टिकुलर पॉइंट को बुझुचे जोथि पई कि आर्ट बसुछ. एडा मने रखिबा हला. at the public library, at the city general hospital. सेही भड़ी ट्रेन arrived at Katak. When we say at Katak, Katak is a big place, we should write here in. Tale at kain ki bosile? Here at Katak means at the Katak railway station. At the station we know पूर्वरु आमे कहिचे बस स्टॉप, पूर्वरु at the bus stop लेकुचे, at the station लेकुचे. Station is a small area of a big place हला. तेणु करी जेतु कटक रो रेलवे स्टेशन को आमे बुझिले, so there we must use at हला. They met at the club, at the station, at the party. एगुडा को मध्य आमे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ प्लेस बोली आमे कहूचे. तेणु आमे ता पूर्वरु कोन बसेबा? आट बसेबा. You have to remember at the club, at the station, at the party हला. नेक्स्ट वन, स्कूल पाखरे मध्य से स्कूल रे अछि आमे कहूचे he is at school. गेटिंग? He is at work, he is at the doctors means से डॉक्टर को पाखरे अछि. एई सेंस रे आमे कहूचे. He is at a desk, at the table means से डेस्क पाखरे बसी खाउची, means से चेयर रे बसीची, डेस्क अछि. ता अर्थ से गेटिंग? He is sitting at the desk or at the table. Like गोटे पेज रो पोर्शन रहिची, at the top of the page, at the bottom of the page हला, at page number 50. ए मान को पूर्वरु मध्य आमे कोन करिबा? आट बसु. तले हमें मन रखिले आट कोठी कोठी बसौचे. आट रो केतरा नियम बहिर देइची आट रो भलो से बुझ. या को हमें आट कहले एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम माने बुझुचे. कॉर्नर स्ट्रीट रो कॉर्नर हले आट दी कॉर्नर हबो. या परे पढिबा पुनी रूम रो कॉर्नर हेतिले रूम जेतु गुटे एनक्लोज्ड एरिया ता पूर्वरु हमें इन बसैबा, इन दी कॉर्नर ऑफ द रूम. जेतु स्ट्रीट ता गुटे ओपन एरिया, एठी गुटे पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम अर्थ रे बुझुचे. तेणु सेठी हमें कोन लिखुचे?
at the corner of the street, at the door, at the bus stop हला से भड़ी देखो बापूजी नगर जे बिग एरिया ता पूर्वरु जेतु 95 अछि मींस 95 पर्टिकुलर गुटे लेन तेनु सेठी हमरो 8 बसुची पब्लिक लाइब्रेरी पूर्वरु हमें 8 बसैबा सिटी जनरल हॉस्पिटल पूर्वरु मध्ये 8 बसैबा 8 कटक मींस 8 दी कटक रेलवे स्टेशन बोली हमें कहूचे ट्रेन टा अराइव कला तेनु सेठी मध्ये हमें 8 बसुचे आ विडा मने रखिया को पड़िबो 8 दी क्लब 8 दी स्टेशन 8 दी पार्टी ये मानको पूर्वरु मध्ये एगुडा भी पर्टिकुलर पॉइंट नॉट द बिग एरिया हला बापूजी नगर कहले बहुत बड़ एरिया से अर्थ रे बुझुची पार्टी गुटे एनक्लोज्ड नुहे स्टेशन गुटे एनक्लोज्ड नुहे क्लब भी गुटे एनक्लोज्ड एरिया नुहे तेनु से मानको पूर्वरु हमें कोन बसैले 8 बसैले मन रहिला से भड़ी स्कूल रे अछि मींस हमें बुझीबानी जे स्कूल रो को रूम भीतर अछि तेनु करी मध्ये हमें 8 स्कूल लिखि थाउ हला 8 वर्क 8 दी डॉक्टर्स हला से भड़ी 8 डेस्क 8 दी टेबल लिखिबा at the top of the page रो गोटे पर्सन को बुझिले तेनु करी at the top of the page at the bottom of the page at page 50 हला next one we see in हमें कोठी बसेबा जेते बडे in टा को हमें लार्जर एरिया सेंस रे नउ सेठी हमें in बसै थाउ आ एनक्लोज्ड जदि चारि आडू कवर हेइथिबो तले सेठी मध्ये हमें in बसेबा so first is written in टा हमें कोठी बसुचे has an idea of being within a larger area. Au kouthi, it also refers to a house or residence where no specific one is mentioned. By example, देखिले हमें बुझी परिबा. He likes to spend the holiday in the country or in a village. Country कहले देश, country कहले मध्य गाँ को बुझु. हला तेनु in the country or in the village. Village कहले गोटे larger area को बुझुचे. तेनु हमें in लेखुचे. हला He lives in London. London is a big city. China is a big country. Se manko purboru madhya in basaiba. Getting? Here you see my brother works in a bank, in an office, in a factory, in a shop. Means these things are enclosed ones. जे बैंक रे कामो करे से बैंक रो बाहर कामो करे ना always he is sitting in front of the computer. Yes or no? So as these are the enclosed area, office means also a particular room is there. Inside the room, someone is working. So he works in an office. He works in a bank. Also he works in a factory. Factory is also inside in enclosed area. And he also works in a shop. Shop means you know, dokan. Dokan ro madhye bhitar thai ki se kamo kore. As these are the enclosed area, always we use what? In preposition in. Next one is you see as room is also an enclosed area in the corner of the room we are saying but before we read at the corner of the street. So here as it is the room we must use the preposition in. He is sitting in the corner of the room. Here Bapuji Nagar, there also Bapuji Nagar but 59 Bapuji Nagar, but here what? Only Bapuji Nagar there. Only Bapuji Nagar means it's a big area. Getting? So there we are using in. Before Bapuji Nagar we are using in. Okay. Next one you see you have to remember this one. Always you write in a line, in a queue. Playground is also a big thing. It is an enclosed one. In the playground, in the field, like this. Cupboard is also enclosed ones, where we keep the cups, or you say the shelf is there, but if the shelf is enclosed, shelf ta ku jodi ame enclose kar deithiba, cover kar deithiba chariadu tar door thibo, then sethi ame in lekhiba. Okay, jodi khali shelf lekha aichi, shelf कहले ame on बसैबा, cupboard कहले in lekhiba, shelf कहले ame thako boli buझु, shelf ta enclosed नुहे तेनु सेठी on बसैबा. Getting? So he put the plates in the cupboard as it is the enclosed one. It has the doors. Understood? Here we see on, preposition of on. Where we write? If the places are not the buildings, generally on ame use korche. Okay? Another also use of the on is there, express of idea of touching, close contact. Se khetra. So first ame padhiba on ro kon. If the places of work is not building, ta purburu ame on बसोचे.
प्लेस ऑफ वर्क टा जदी बिल्डिंग हे न थाए ताले ता पूर्वरु आमे कोन बसैबा ऑन बसैबा हला ताले ऑन ए फार्म ऑन ए रबर प्लांटेशन परीक्षा रे डिटो ई वर्ड ही आसुची रबर प्लांटेशन क्वेश्चन आसुची हला तेणु ऑन ए फार्म ऑन ए रबर स्टैम्प सॉरी ऑन ए रबर प्लांटेशन हला एटा मने रखिबा से भली देखो द मीटिंग वाज हेल्ड ऑन द प्रीमाइसेस ऑन द कैंपस ऑफ द कॉलेज कॉलेज रो प्रीमाइस कॉलेज रो प्रीमाइस कहले हमें कोन बुझुचे कॉलेज रो हता भीतर हला कॉलेज रो कैंपस भीतर से हता भीतर हताटा कहले हमें बिल्डिंग को बुझीबानी as the place of work is not building we must use the preposition what on understood तले on हमें कोन पई पढैले कोन पई बुझिले जदी work of place is not a building then we use on understood see body for the idea of touching तले पेन इज ऑन माय हेड कहले पेन टा मो मुंडर सरफेस ऊपर टच करके रही द पेन इज ऑन माय हेड आमे कहूछ गेटिंग द बुक इज ऑन द टेबल बुक टा टेबल रो सरफेस ऊपर लागी करी रही तेणु से जगह रे आमे ऑन बसौछ हला आइडिया ऑफ टचिंग और क्लोज कांटेक्ट केमिति आमे देखिबा देयर इज ए नोटिस ऑन द नोटिस बोर्ड नोटिस टा नोटिस बोर्ड ऊपर स्टिक करा हिच बा ऑन दी वॉल हिच ही इज सिटिंग ऑन द ग्रास जो अछि भूई ऊपर ता सरफेस को से लागी के से बसची टच करूची तेणु जेहेतु सरफेस को से टच करूची छुईची तेणु से जगह रे हमें कोन बसौचे ऑन ही इज सिटिंग ऑन द ग्रास ऑन द बेंच ऑन ए चेयर किंतु जदी आर्म चेयर हेतिबो मींस जहार दीटा हाथ थाई जो चेयर हाथ थिबो ताले जदी से आर्म चेयर भीतर बसीची ताले सेठी हमें इन यूज करबा but in is used in an arm chair हला से भली there are books on the floors बही गुडा को फ्लोर ऊपर अछि बही गुडा को फ्लोर को लागी करी अछि गेटिंग तेनु से जगह रे मध्ये हमें ऑन दी फ्लोर लिखिबा तले ऑन कोठी हमें पढिले जेते बेले सरफेस को लागी किता जिंस गुडा को थिबो कहा ऊपर कोन सी जिंस थिबो तले से जगह रे हमें कोन बसैबा ऑन प्रीपोजिशन बसैबा मन रहिला इन टा हमें को अर्थ रे बुझिले या पूर्व पढ़ी इन को कोट पे पढ़ले एनक्लोज्ड एरिया हला ऑन टा पड़ुचे ता ऊपर सेंस रे बुझुचे हला एबे देखिबा ही केप्ट हिज बुक ऑन द सेल्फ ही इज स्टैंडिंग ऑन द बालकनी हला जते बेले सेल्फ टा जेहेतु अनक्लोज्ड नुहे यदि कबोर्ड टा एनक्लोज्ड थिला सेल्फ टा जेहेतु एनक्लोज्ड नुहे तेणु सेठी कोन बसिला ऑन बसिला स्टैंडिंग ऑन द बालकनी टा मध्ये संपूर्ण कोन नुहे चारियाडे कांथ नाही रूम भड़ी तेणु बालकनी पूर्वरु मध्ये हमें कोन बसैबा ऑन बसैबा प्रॉक्सिमिटी मींस पाखरे बसौछ मो पाखरे सी बसिची ही इज सिटिंग ऑन माय लेफ्ट ऑन माय राइट आ एटा बहुत इंपोर्टेंट सब बड़े परीक्षा रे आसे दिस वन यू हैव टू रिमेंबर हरिद्वार इज ऑन द गंगास मींस अर्थ हमें कोन बुझिले हरिद्वार टा गंगा नदी पाखरे ऑन द प्रॉक्सिमिटी ऑफ गंगा हला गंगा नदी पाखरे अर्थ रे ऑन द गंगा बोली कहबा हला लंडन इज ऑन द थेम्स शहर टा सॉरी थेम्स नदी पाखरे लंडन शहरटी अछि हला कटक इज ऑन महानदी ए सेंटेंस गुडा को हमें मन रखिबा ए विलेज ऑन द फ्रंटियर गोटे विलेज टा अछि कोठी फ्रंटियर मींस बॉर्डर पाखरे तेणु से जगह मध्ये ऑन द फ्रंटियर ए देश मन निहाती मन रखिबो परीक्षा रे निहाती आसुची दिस वन ऑन द गंगास ऑन द महानदी हला लंडन इज ऑन द थेम्स ए विलेज ऑन द फ्रंटियर एउडा परीक्षा रे निहाती आस हला से बडी हाउस ऑन द मेन रोड रो पाखरे अछि that is the house on the main road what does it means that house ta main road पाखरे अछि proximity पाखा पाखी a town on the coast समुद्र कूल पाखरे गोटे टाउन अछि trees on both sides of the river रो उभय साइड्स रे ट्री अछि हला तले हम एठी ऑन कोन पई पढिले
proximity पाखरे means close to होला on my left on my right on the गंगास कहले नदी पाखरे बोली बुझिले एटा सब बेले परीक्षा रे आसे frontier मध्ये आसुची a village on the frontier होला a town on the coast a village on the main road by a house on the main road होला on both sides of the road होला ए एक्सप्रेशन मने रखी होला से बड़ी देखो he lives on an island कहीं की आइलैंड से गोटे आइलैंड रे रहे एटी कहीं की एटा करा हिची एटा होची अननेम्ड लैंड मास ए आइलैंड पूर्वरु मध्ये हमें अन बसैबा एमिति किंतु हमर एटी टिके पजल हुए जे आइलैंड तो कहले गोटे द्वीप द्वीप को तो गोटे बहुत बड़ जगह ताले हमें कहीं की सेठी इन बसौना हला एथि पई बसौना इट इज द अननेम्ड लैंड मास हला से लैंड मास रो ना किछि नाही हला जो आइलैंड कहले बुझ परछे आइलैंड कहले कोन द्वीप मींस व्हिच इज सराउंडेड बाय वाटर इन एवरी साइड हला तो आइलैंड पूर्वरु मध्ये हमें ऑन बसेला मन रहिला तले आज हम कोन कोन पढिले फर्स्ट प्रीपोजिशन ऑफ आर्ट पढिले तापरे कोन पढिले तापरे इन पढिले तापरे ऑन पढिले मन रहिला नेक्स्ट वीडियो रे हमें कोन करिबा ना से प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस रो अलगा प्रीपोजिशन सब पढिबा बाय बिसाइड ओवर एबव एगुडा को सब पढिबा हला ओके थैंक यू।